Okay, now step 2, second step. Step 1 we have seen fixing of the paper. Okay, then ebony edge, we have seen ebony edge. Then this is the marking side. This is the marking side. You can see the marking side of the T scale. You have to keep it, mount it on the ebony edge. Okay, place it. Please make sure ये जो है वो ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए. It has to be horizontal. It has to be horizontal. It has to be horizontal one. Okay, then the line movement. अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया तो लाइन आपकी टेढ़ी जाएगी. It will go upward. It will not be straight. Okay, so you have to keep it horizontally properly. That you will learn after a good practice. Okay, practice daily 2 hours initial. So it has to be straight. It should not be upward. It should not be upper. It should not be downwards. Okay, it has to be horizontal as far as possible. Okay, so that is practice is very important. Now we will see how to draw horizontal lines. Okay, paper place कर दिया. Now second things, with the left hand side you place the T scale on left hand side. Okay, so that you have to make sure that there should not be gap between paper and the T scale with the help of ebony edge. तो देखना होता है कि ये एक ही लेवल में है कि नहीं. ठीक है, सो गैप नहीं होना चाहिए. सो first we'll see how to draw horizontal line with the T scale. Okay, so hold it like this. एकदम भी जोर से नहीं पकड़ना है और एकदम भी हल्के हाथ से नहीं पकड़ना है, अदरवाइज इट विल मूव. Okay, so generally we keep it like this for practice session. Okay, you will keep it like this, or from top to bottom we will see how to draw horizontal lines, how to use the horizontal lines. Okay, so generally put it like this. Okay, place करो ठीक से at your comfort level, place करो ठीक से. Okay, place करो ठीक से. Then from top to bottom you have to go ऊपर से नीचे. With the pencil, irregular pencil, hold it properly with the left hand side. Pressure थोड़ा left hand side में आना चाहिए. Okay, make sure it is not ऊपर नीचे जाना चाहिए. You will not get it one shot. It need a practice. Okay, since it is online, it will be a little bit difficult for us also. It will be difficult for us also, but you have to keep a practice. We will give supporting videos also. So इसको horizontally करना है. Draw horizontal lines. Can you see the line? There is a line, horizontal line. Okay, another, I will draw another line. Okay, place it like this. थोड़ा सा नीचे लेके आओ. Draw another line. This is called horizontal line. Practice of horizontal lines. You may not see the thickness or darkness of the line, but there is a line, but there is a horizontal line. Okay, again move downwards. Horizontal lines. Move downwards. आराम से horizontal lines. Okay, please make sure all this line, ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन. ओके, फोर्थ लाइन शुड बी पैरेलल. इट इज़ नॉट लाइक दिस कि ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे ऊपर गई, तीसरी लाइन अभी थोड़ी नीचे गई, ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, इट हैज़ टू बी पैरेलल. सो फ्रॉम दैट लाइन अगेन मूव डाउनवर्ड्स. horizontal lines, again go आराम से horizontal lines. This is called horizontal lines. Clear? Okay. So with the help of T scale and proper practice, और टेढ़ा नहीं जाना चाहिए. It should not be like that. Now I will say what you should be avoid. What should you avoid? Okay. ये लाइन्स horizontal आनी चाहिए. It is wrong. अगर ऐसी लाइन गई, this is wrong line. This is wrong. This is wrong line because it's not parallel. This is not parallel. Okay, this has to be. So I'm erasing it.
I am erasing it. And this is my first demo video, so you have to be a little bit, I am trying my best to show you with the help of video. Okay, but there are various videos available on the YouTube also for manual drafting. Okay, so लाइन्स है वो स्ट्रेट आनी चाहिए. हाँ, लाइन अगर आई एम डूइंग अनदर लाइन. ओके, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है. आई एम अगेन टेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन. इट हैज़ टू बी पैरेलल, इट हैज़ टू बी पैरेलल. अगेन पैरेलल लाइन, आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन्स. horizontal lines. Okay, so there are various lines. Okay, clear now. Now with the now with the I'm making more darker, I'm making more darker, I'm making more darker, so it can be visible. Okay, now with the help of these things, now horizontal lines, with the help of 45 degree set square, you have to draw vertical lines, you have to draw the vertical lines. Okay, so I'm going नीचे से, I'm going नीचे से ऊपर. Okay, I'm just taking this one line, I will draw vertical lines. This edge and this edge. Okay, कोई भी एक एज, ये वाली या ये वाली आपको इसके साथ पैरेलल रखनी है. ओके, सो इट हैज़ टू बी पैरेलल, इट हैज़ टू बी लाइक दिस. कैन यू सी, दिस इज दिस लाइन एंड दिस लाइन, वन सरफेस हैज़ टू बी टच्ड, इट हैज़ टू बी टच, इट हैज़ टू बी टच, सो दैट इट विल मूव लाइक दिस. सो इट विल मूव, इट विल स्लाइड लाइक दिस. हाँ, इसको होल्ड करना है. अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो वो टेढ़ा हो जाएगा लेंस. सो हैज़ टू बी हॉरिजॉन्टल लेंस. इसको ठीक से प्लेस करना है. हाँ, यू टू कीप इट प्लेस करना है. इसको हिलाना नहीं है. दिस शुड नॉट बी ऊपर नीचे. ओके, सो इट हैज़ टू बी प्रॉपरली फिक्स विद द हैंड. इसको आपको, हाँ, इसको पैरेलल रखनी है, इसको पैरेलल रखना है, इसको पैरेलल रखना है इसके साथ. ओके, दिस surface and this surface you have to keep it like this. So you will get a 90 degree, so you will get a 90 degree, you will get a 90 degree. So now I'm drawing vertical lines, now I'm drawing vertical lines using the 45 degree, using the 45 degree. This is 45 45. Okay, so इसको मैंने प्लेस कर दिया. हाँ, ये मूव नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी मूव, ये मूव नहीं होना चाहिए, इट हैज़ टू बी फिक्स्ड. ओके, सो ये होगी, ये प्लेस कर दिया. इसको प्लेस करना है प्रेशर करके, इसको होल्ड करना है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर एंड दिस फिंगर यू हैव टू मूव दिस, यू हैव टू मूव दिस. ओके, तो इसको प्लेस कर दिया, की स्केल को, सेट स्क्वायर को प्लेस कर दिया. नाउ वर्टिकल लाइंस, आराम से vertical lines, you have to go vertical lines. So this is called vertical lines. So this way you get the vertical lines, you get the vertical lines. Okay, I am just continuing. Fix कर दिया. So vertical, you have to practice it daily on the paper. Verticals. So this is called vertical lines. Okay, left to right, or right to left, or left to right, this way, this way, so you can draw the vertical lines. Okay, now angular lines, now the angular lines. Okay, so one is
one is this is horizontal, this angle is 60 degree, so you can see a 60 degree angle over here, and this is the 30 degree angle. So I'm placing again placing the set square T scale, and I'm drawing 30 degree angle. This is 30, this is 30 degree angle. ओके, सो 30 डिग्री एंगल, ये 30 है, ये 30 है और ये 60 है. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. सो मैंने इसको प्लेस कर दिया. नाउ आई वांट टू ड्रॉ द 30 डिग्री एंगल. ओके, सो आई विल प्लेस लाइक दिस. दिस एज एंड दिस एज हैज़ टू बी टच. तो इसको मैंने this edge and this edge, longer edge has to be mounted like this so that you get a 30 degree. So इसको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया. ओके, सो 30 डिग्री, 30 डिग्री का लाइन, 30 डिग्री का लाइन, कीपिंग इन द माइंड दिस इज से माई हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस इज माई अगेन 30 डिग्री, 30 degree, 30 degree. So this my 30 degree. This angle is 30. Again I will show. Okay, ये हाँ wait. Okay, so ये हो गया. Then you have to draw again 30 degree, 30 degree, 30 degree. आई विल ड्रॉ हियर 30 डिग्री. इसको हिलाना नहीं, इसको आपको फर्म रखना है, इसको आपको फर्म रखना है. दिस हैज़ टू बी फर्म, इट हैज़ टू बी फर्म. 30 डिग्री, 30 डिग्री. हाँ, 1 वीक, 1 वीक या 2 वीक आपको कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करनी है. सो दिस वे यू गेट अ 30 डिग्री. नाउ दिस इज दिस डायरेक्शन. नाउ आई विल टर्न, दिस इज माई दिस साइड. हाँ, आई विल टर्न लाइक दिस. आई विल टर्न लाइक दिस. पहले ऐसे था, फर्स्ट पोजीशन वाज लाइक दिस. पहले ये पोजीशन था, ये पोजीशन था. अभी उसको मुझे अपोजिट करना है, मिरर. सो मैं क्या करूँगा, ये जो है उसको घुमा के ऐसे रखूँगा दिस साइड. सो अर्लियर 30 डिग्री ऑन माई दिस साइड, नाउ 30 डिग्री विल बी लाइक दिस. ओके, सो आई विल ड्रॉ opposite directions, same line, so you can see the difference. Okay, so place like this. 30 degree, this is 30 degree line, this is 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30 degree, 30 degree. So you can see another side 30 degree. Earlier 30 degree was here like this, 30 degree was like this. Now 30 degrees with this. So angle, this you have to keep in the mind. This is your 30 degree. Okay, so 30 हो गया. अभी now we will use 60 degree. Now we will use 60 degree. Now we will use this angle 60 degree. हाँ, पहले ये किया था. Earlier we have used this 30 degree. Now we will use this 60 degree. Okay, so we will keep a line, another line, horizontal line, and this side and this side. Same टच होना चाहिए. This side and this side, not the longer one, this side has to be like this. Okay, so that you will get a 60 degree. So that you will get a 60 degree. You will get a 60 degree. Okay, so I will use this line, I will use this line only, so you will get a difference. Same line, I will use same line. Okay, so I will get a 60 degree. Okay, so इसको place करना है. See this and this side has to keep it like this, touch. So you will get an angle of 60 degree. You will get an angle of 60 degree. You will get an angle of 60 degree. Okay,
So 60, 60, 60, 60. It has to be parallel. It has to be parallel. It has to be parallel. Okay, not like this. Not like this. Wrong. Not like this. It has to be parallel. This you will get after good practice. You have to do a good practice. So make sure it has to be, this line has to be horizontal. Line has to be absolutely horizontal, and place it accordingly. ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. Okay, so this is your 60 degree. This is your horizontal. This is your horizontal. This is your horizontal, and this is your 60 degree. This is your 60 degree. This is your 60 degree. This is your 30 degree. This is your 30 degree. This is your 30 degree का line. This is your 30 degree का line, and this is your 60 degree का line. This is your 60 degree का line. Okay, this is your 60 degree का line. One line. So I can use this direction. I can use another one. Okay, ये हो गया. Now I can see this horizontal line. I will draw opposite direction. I will draw up. This is 60 degree. This side, this way. Now I will use opposite sides. So this is my horizontal line. This is my horizontal line. Okay, and I will place. अभी इसको ऐसे place किया था. अभी उसको मुझे ऐसे place करना है. Like this side. Okay. Earlier it was like this. Earlier it was like this. Earlier ये angle में था, this direction. Now I have to reverse it. So what I will do, I will move it like this. ये साइड और ये साइड, लंबी वाली साइड आपको प्लेस करनी है. दिस साइड एंड लंबी वाली, लॉन्ग लेंथ, आई हैव टू प्लेस इट. So I will get this longer side, this longer side, this longer side, this longer side, this longer side. I have to place like this. Okay, so ये मेरा माउंट हो गया. So I will draw 60, 60, 60, 60, 60. So this is my again 60 degree. One direction like this and another is like this, opposite sides. Okay, clear? You have to practice this. Thank you.